we are today starting with another discounting cash flow technique. लास्ट क्लास तक हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को देख चुके हैं और आज की क्लास से हमें जो एक नई डिस्काउंटिंग टेक्निक शुरू करनी है विच इज द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड. Profitability index method. So when we talk about NPV, we all know what exactly is NPV, net present value. ये डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक है जिसमें हम टाइम वैल्यू को कंसीडर करते हैं. इट मींस वी डिस्काउंट द फ्यूचर वैल्यूज or we convert the future values into the present value so that we can compare the inflows and outflows. So NPV we all know, which is present value inflows deduct present value outflow. Outflows are mainly they are in present value only. All we need to convert these inflows into present value. Inflow converted in present value. Okay, fine. So ये NPV था. जब हम NPV की बात करते हैं, it is one of the most important and one of the most used method in capital busting, and we have already seen this the method. If the decision criteria of NPV was, if the NPV is positive, it means if the present value inflows are higher than present value of outflow, it means the NPV net present value is going to be positive and the project should be accepted. The project should be accepted. In case if this is negative, then project should be rejected. And a case where NPV equals to 0, it means company is basically indifferent whether they want to go with the project or not, because this project primarily is not adding up anything to the value of the shareholders, right? तो ये हमें ध्यान रखना है. एनपीवी पॉजिटिव है तो आप एक्सेप्ट करेंगे, एनपीवी नेगेटिव है रिजेक्ट करेंगे, एनपीवी का 0 है तो वी आर न्यूट्रल, we may or may not accept the project. Now, when we were talking about the NPV, and I told you, in case if the NPV, if there are multiple projects, and these multiple projects have positive NPV. This project has positive NPV. This project is also having the NPV positive. NPV project positive. NPV positive. Now, the question arises how many and which product we should take into consideration. The company should go with which particular capital busting project. As I told you before, NPV with a project, the NPV which is a higher NPV, the project with the positive NPV, the company should go with the project which is having the higher NPV. But at the same time, every single project is offering us positive NPV, right? चारों के चारों प्रोजेक्ट हमें पॉजिटिव एनपीवी दे रहे हैं. द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या आपको चारों प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए या आप किसी इसमें से एक प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहेंगे. So there is a decision rule which is based on capital rationing, limitancy of capital or capital rationing. If there is no capital rationing, it means unlimited capital. If there is unlimited capital, it means company
will company will go with every every positive एनपीवी project. क्योंकि कंपनी के पास पैसों की कोई अगर उनके पास किसी भी तरह से फंड्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, जैसे कि हम जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं तो वन ऑफ द assumption of the capital busting is that the company has no capital rationing. It means the company has unlimited funds, although it is not same or it is not realistic in day to day life in real world. But एक तरह से अगर हम माने कि in case if there is no capital rationing, then company, because they have no limitancy of the funds, तो जो भी फंड्स कंपनी को एनपीवी पॉजिटिव प्रोवाइड करेंगे, द कंपनी विल गो विद ईच एंड एवरी फंड with each and every project. The reason is every single project is providing company a positive outcome, right? So it every single project here. For example, if I talk about this, this is providing the NPV, positive NPV, positive NPV, and positive NPV. So these projects have the positive NPVs. So this case, my company will undertake all four projects. All four projects. Reason is company के पास funds की कमी नहीं है. This is the hypothetical situation, but which is the real case, when we talk about the real cases when the company is actually having the capital limitancy, the company has the limited funds. So in such a situation, when the company has a limited fund, what exactly will be the situation? Company should go with which project? Should company go with the first project, second project, third project, or the fourth project? So basically, the very general understanding when we say the limited funds, when we talk about the limitancy of funds, limited funds की जब हम बात करें, normally layman, all we can say or we can generalize this statement, the project which is giving the highest NPV in term of rupees, because NPV आपको absolute measurement के बारे में बताता है. Absolute measurement in term of money, in term of currency, absolute measurement. NPV is the absolute measurement. कैसे? For example, present value of inflow is 5 lakh and present value of outflow is 3 lakh 20,000. Now, the NPV in this case is going to be 1 lakh 80,000 is the NPV. What is this 1 lakh 80,000? It is rupees or the dollar, or it could be any currency, right? So basically, when we talk about the NPV, it always gives us the absolute measurement. Now, जब आप लिमिटेड फंड्स की बात करते हैं तो आपका एक क्राइटेरिया ये हो सकता है कि द प्रोजेक्ट विच इज गिविंग अस मोर एनपीवी, राइट? जिस प्रोजेक्ट से हमें ज्यादा पॉजिटिव एनपीवी मिल रही है, हम उसी प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए, बिकॉज यू कैन नॉट अंडरटेक ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट, बिकॉज इन केस इफ द फंड्स आर लिमिटेड, then these four projects will be mutual exclusive in nature. अगर आप एक को ऑप्ट करते हैं तो बाकी तीन को ऑप्ट नहीं करेंगे, अगर आप सेकंड को करते हैं तो बाकी तीन को नहीं करेंगे, थर्ड को करते हैं तो बाकी तीनों को नहीं करेंगे, सो एंड सो फोर्थ, राइट? तो जब हम लिमिटेड फंड्स की बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना जरूरी है कि एब्सोल्यूट मेजरमेंट यहाँ पर आपका क्या डिसीजन रहेगा. अगर आपके पास फंड्स लिमिटेड है, आपके पास अगर फंड्स लिमिटेड है, तो आपका एक जनरलाइज आइडिया ये हो सकता है, प्रोजेक्ट having having हाईएस्ट एनपीवी. जिस प्रोजेक्ट की हाईएस्ट एनपीवी आप उसके साथ जाइए, that project is going to be profitable for the company and the company will go with that project only. This is the case of NP. But at the same time, there is another thing which we are ignoring when we are dealing with this criteria, when we are deciding that's the way that we should undertake the project. कि जिसकी ज़्यादा NPV उसके साथ जाना चाहिए. But at the same time,
एनपीवी सिंस इट्स एब्सोल्यूट मेजरमेंट, एनपीवी आपको यही बताता है कि आपको एक प्रोजेक्ट से पॉजिटिव फ्लोज इनफ्लोज कितने मिल रहे हैं, बट डज इट टॉक अबाउट the money involvement, how much money is involved, how much outflows are involved in order to generate those positive inflows. For example, if this project is giving us 1,80,000 rupees as positive inflows, net positive inflows, एनपीवी आपको सिर्फ इतना बताएगा कि 1,80,000, क्या एनपीवी ये बताता है कि उसके लिए आपने 3,20,000 रुपीज खर्च किए? नो. So what does it mean? It means कि NPV is the absolute measurement. It may give you the wrong impression about the company's or the project's profitability or the project attractiveness. Because ये इसके बारे में बात नहीं करता कि आपका फंड कितना जाता है, right? ये क्योंकि absolute measurement है. For example, if I talk about NPV of project 1, NPV of project 2, and NPV of project 3. These are the net present value of these projects. First project 80,000, second project 1 lakh, and third project is 60,000. So when you look at the NPV, since it's the absolute measurement of capital busting decision making method, you will always go with second NPV because it is giving the highest NPV. कि अगर हम लिमिटेड फंड्स की बात करें तो आप उसी प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहेंगे जिसमें आपको हाईएस्ट एनपीवी मिल रही है. बट अगर आपको ये भी पता लगे कि प्रोजेक्ट 1 की पॉजिटिव एनपीवी के लिए आपने 1 लाख खर्च किया, विच इज द आउटफ्लो, इसके लिए आपको 10 लाख खर्च करने पड़े एंड इसके लिए आपको सिर्फ 40,000 खर्च करने पड़े थे. इट मीन्स द आउटफ्लो. नाउ योर डिसीजन माइट बी टोटली डिफरेंट in this situation, because if you look at the very first case, in the very first project the outflow was 1 lakh and the positive npv was 80,000. यानी 1 लाख आप आउटफ्लो आप खर्च कर रहे हैं, आपको पॉजिटिव एनपीवी मिलता है 80,000 का. एंड इन सेकंड केस आप 10 लाख रुपीज का आउटफ्लो आप करते हैं इनिशियली, उसके बाद आपको पॉजिटिव एनपीवी आपका आता है 1 लाख. एंड इन थर्ड केस इट इज जस्ट 60,000 रुपीज, बट the capital required, the initial cash outflow is lesser, which is very less. Now your decision might be totally different because now we are looking at the absolute picture, we are now looking at the entire picture. We are also looking how much fund is required to generate these npvs. Now in first case it looks attractive, in second case if you look at the npv it is attractive, but if you look at the initial cash outflow which is massive, 10 lakh rupees per 1 lakh. Now if you look at the third one, which one is the most attractive, because initial cash outflow is just 40,000 but you are generating 60,000 with the help of that 40,000 rupees, it means your decision may change. So इसलिए हमें एक इम्प्रोवाइज वर्जन चाहिए एनपीवी का in order to understand the complete picture whether we should go with the project or we should not. तो अगर हम एनपीवी देख रहे थे, when we were looking at the npv, so this project was profitable when we were looking at npv, but when we are looking at this, now this project number 3 is more attractive. This project number 3 is more attractive क्योंकि कम पैसा लगाकर आपको ज्यादा एनपीवी मिल रहा है. तो इसके लिए we have another improvised method which is the extension of NPV method, right? Which is known as profitability index method. तो अब मैं आपको profitability index method बताने वाला हूँ. What exactly is this profitability index method and how this profitability index method work, and why this profitability index method has a superiority over the NPV method. They are nothing. They are the same. Profitability index method or the NPV, they are same. But the NPV is the absolute measurement. And when I talk about the profitability index, it is the relative measurement. Always, we should always rely over relative measurement, right? So relative measurement की हम बात करते हैं, which is the extension of NPV. Now,
So the method is profitability index method. What is this profitability index method? First of all, I'm going to write the right formula, then I'll explain. Profitability index method. PI, I'm going to denote the profitability index method as PI. PI equals to, now look at this. Same NPV method is going to change now. Present value of inflows divided by present value of outflow. Simple. It is nothing but the relative measurement of NPV. Although when we were looking at the NPV was this. NPV was giving us the absolute measurement in term of money. Present value of inflows minus present value of outflow. Now, if you compare these methods, we easily get to know that the first method is relative measurement of the same thing. We are also we are trying to convey, we are trying to get the information, the same information we are getting from the NPV, but in a different way. और information वही है, बस उसको देखने का तरीका change हो गया है, right? Now, if I talk about a project, for example, there is a very small example. Present value of inflow is given in question, which is 80,000, and present value of outflow is 60,000. So we can easily tell this project has positive NPV of 20,000. But at the same time, if I want to know the PI, profitability index, it is going to be 80,000 divided by 60,000. 80,000 divided by 60,000 means 8 by 6. 8 by 6 means 4 by 3. 4 by 3 means 1.33. So PI is 1.3. Profitability index is 1.3. Now, what does it mean this 1.3? ये हमें समझना जरूरी है. What does it mean by this 1.3 PI? When we talk about this PI, it simply means for every single rupee, for every 1 rupee, we are getting the present value of rupees 1.33. राइट. सो इट इज समथिंग कि आप 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं और आपको जो प्रेजेंट वैल्यू मिलता है इनफ्लो का वो मिलता है इन टर्म ऑफ रुपीज 1 रुपी 33 पैसा. अब नाउ दिस मेथड कैन प्रोवाइड अस द रिलेटिव कंपैरिजन. We can easily compare the different type of NPV projects irrespective of their cost, irrespective of their इनफ्लोज. क्योंकि पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी, हम पहले वाले प्रोजेक्ट्स को इसलिए कंपेयर नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ देयर कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज ऑफ देयर एनपीवी. हमने लास्ट में भी देखा कि एक प्रोजेक्ट ऐसा था जिसमें एनपीवी तो हाईएस्ट थी व्हिच वाज 1 लाख रुपीस, बट एट द सेम टाइम वी वर यूजिंग 110 लाख रुपीस एज इनिशियल कॉस्ट. तो इसका मतलब तो सिंपल सा है कि ऐसे केसेस में एनपीवी काम नहीं करेगा व्हेन यू हैव टू कंपेयर द प्रोजेक्ट. इन ऑर्डर टू कंपेयर द प्रोजेक्ट व्हाट वी नीड द इम्प्रोवाइज्ड वर्जन व्हिच इज द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. नाउ we can easily compare the different projects. Now, the projects are NPV1 of first project, NPV2 of second project, and NPV3 of NPV of third project. Now, NPV is given 60,000. NPV of second project is given 1 lakh. And it is given 80,000. Now, अगर सिर्फ NPV को देखा जाए तो सबसे फेवरेट आपके लिए ये होना चाहिए. अगर if there is no capital rationing, if there is no capital limitation, you will opt every three. I mean, you will opt all three projects. क्योंकि आपकी वैल्यू एडिशन कितनी होगी 60,000, 1 लाख प्लस 80,000 which turns out 2,40,000 आप शेयर होल्डर वेल्थ में ऐड करेंगे. बट दिस इज नॉट द रियल सिचुएशन.
Because in real situation, we always have the capital problem, we always have the capital limitancy, right? So, but now if you look at this, आपके लिए attractive हो सकता है, but again आपके पास फंड्स कितने हैं ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है हाउ मच फंड्स यू हैव यस फंड्स तो लिमिटेड है दैट वी ऑल नो और उसके लिए हम एनपीवी टू ऑप्ट कर रहे हैं बट एट द सेम टाइम वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन कि हाउ मच फंड्स आर देयर आई मीन आपके पास कितने फंड्स हैं और कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका एनपीवी जनरलाइज या जनरेट होता है नॉट जनरलाइज सॉरी जनरेट होता है नाउ अब हमें पता लगा एनपीवी वन 60,000 जो जनरेट हो रहा है वो हो रहा है present value of inflow pi is present value of inflow 2 lakh and present value of outflow was 1,40,000 that's why we have got this 60,000 NPV. Now project number 2 present value of inflow 3 lakh and present value of outflow 2 lakh. Third project present value of inflow 5 lakh present value of outflow 4,20,000. Now prima facie we all can see the project number 3 is least favorable because if you look at this there is a highest outflows involved of rupees 44,20,000 whereas if I talk about the NPV number 2 and NPV number 1 they are providing us reasonable NPV with a given amount of capital. Now first project अब मुझे PI कैलकुलेट करना है आई वांट टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पर रुपी इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना इनफ्लो मिल रहा है हम उसकी बात करें 2 lakh divided by 1.4 lakh it is going to be 20 upon 14 which is 10 upon 7 10 upon 7 is 1 3 0 7 4 0 28 and 2 2 7 yes 6 1.42 1.42 is the profitability index of first project. Now 3 lakh divided by 2 lakh which is going to be how much 1.5 yes 1.5 1.5 now in this case 5 lakh divided by 4,20,000 which turns out 250 divided by 210 210 again divided 105 and 125 just a minute again further divided 125 divided by 105 equals to 1.19 this these are the profitability index. Now if you look at these profitability index we can easily compare them and we can easily ascertain that project 1 says for every single rupees of initial investment we are getting the present inflow of rupees 1 rupees 42 paisa. For the second project it is 1 rupees 50 paisa for each 1 rupee investment initially and in third project it is only 1 rupees 19 paisa. So we can easily confirm that the project P profitability index is more profitability index is providing us more information about every single rupee involvement and we can confirm 1 rupees 50 paisa is the highest. Now if you look at the NPV भी same answer बता रहा है यहाँ पर and PI is also giving us the same answer the same solution right it may or may not possible right it's not necessary the NPV and the PI both will tell you the same story no it might be possible that the NPV as per NPV the project number 2 was attractive but as per this PI method the project number 1 or 2 1 or 3 might be attractive. तो कहने का मतलब है प्रोजेक्ट्स को अगर आप रिलेटिवली कंपेयर करना चाहते हैं तो NPV is not
a right method because the NPV is the absolute measurement of capital busting techniques, whereas this PI is relative measurement of comparison, which is mostly we use when we have to compare the different projects. And वो कब होगा जब आप इसकी बात करेंगे कैपिटल लिमिटेंसी की बात करेंगे जब आपके पास पैसा भी लिमिटेड है और पैसा लिमिटेड है तो ऑब्वियसली आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके लिए कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा आपको रिटर्न दे पा रहा है. That's how we look at the PR method. Sir, हाँ जी बोलिए. sir, is there any ideal range of PI? No, there is no ideal range. It should be more than one only, right? Look at the case. If it is more than one, it simply means that whatever the cost is involved, you are having the present value inflow is higher than your cost, right? So there is no particular range, or the company may decide its own range, or the industry may decide its own range. But as per if I talk about the textbook, कि किसी textbook में क्या कोई range दी गई है? No, there is no such range which is given because the PI is relative measurement. Relative measurement हमेशा comparison बताते हैं कि आपके पास इतने सारे projects हैं. Obviously, the project which is giving the highest 1 rupee single investment, highest return in 1 rupee single investment, you will always go with that investment. Okay. Okay, sir. Now we can also see the relationship. Relationship की तो हम बात ही यहाँ पे करने की जरूरत भी नहीं है because we have already seen ये दोनों एक ही चीज है. One is relative measurement and the second one is absolute measurement. NPV is the absolute and the PI is relative measurement. Now NPV and PI. There's a one direct relationship we all can observe. Simple. If the is PI more than one, if the PI is more than one, if PI is more than one, it simply means the present value inflow is higher. It means the numerator is higher than the present value of outflow, which is the denominator. It simply means the project is going to have the positive NPV. अगर ऐसा कोई केस है तो आप सीधा समझ सकते हैं कि it is going to have NPV is going to be positive. Now, in second situation, if the PI is less than one, which is not the favorable investment because it is not increasing your value, it's not increasing the shareholder wealth, whereas instead it is decreasing the shareholder wealth. If the PI is less than one, when the PI is less than one, it simply means numerator part is lesser than denominator. Denominator, which is the present value of outflow ज्यादा है present value of inflow की comparison में, यानी NPV वहाँ पे नेगेटिव ही होगा for sure. और हमें पता है कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसका एनपीवी नेगेटिव है वो हमें ऑप्ट नहीं करना. Now the third case, if the PI is equals to 1, simple, equals to PI equals to 1, it means NPV is going to be 0 and it also means वो मैं आगे बताऊंगा IRR is NPV and IRR discount rate. ये आगे की इंफॉर्मेशन. The question arises which method is more suitable. It depends on different situations. As I told you, NPV is suitable when you have no limitants of the capital. PI's method is suitable when you have to compare the different method, the different projects. The PI उस केस में यूज करें. So I hope this part is clear to every single one of you. Yes, sir. Yes, Now, there is another method which is known as internal rate of return. Internal rate of return. But before doing starting with internal rate of return, okay, so I may ask this question. I'm not very sure. I'm not even expecting from you people that you have solved the question. Jyoti, have you solved that question? The question I gave you. I mean,
question we discussed in last class? Yes. Okay, so can you tell me your answer for every single year? For first year? Yes, POD? Sorry, sir. I won't be able to tell answers now. ओके, ठीक है। आपने सॉल्व किया है ना? सर मैंने सॉल्व किया था पर मेरी सिस्टर ने वो पेज फाड़ दिया। ओके, ठीक है। सर हाँ जी, निखिल बोलिए। सर फर्स्ट ईयर का 91,000 है, गुड। सेकंड ईयर? सेकंड ईयर का 80,300, गुड। थर्ड ईयर? 72,365, यस। आगे? फोर्थ का सर 66,486, ओके, गुड। एंड द लास्ट ईयर? 62,134। 62,134 प्लस सर 2,20,000। वो चेंज होगा ना, 1,41,418 आ रहा है मेरा लास्ट ईयर का, बाकी सर सारे ईयर। प्लस अभी टर्मिनल करना है अभी। ओके, फाइन, गुड। हाँ, रचना बोले। सर लास्ट ईयर का 1,41,418 आ रहा है मेरा तो, ओके। और जो निखिल ने बताया वही आ रहा है मेरा भी। नहीं, लास्ट ईयर intro would be of 2,04,849, right? Can I tell you how this 2,04,849? See, I hope you have already calculated 62,134, right? यस सर। Okay, fine. Acha, now we have to add the differences in salvage value. So what is the difference in salvage value? कल मैंने बताया था 77,284, that was 285। that was a taxation. वो टैक्स था, मैं सैलवेज वैल्यू की बात कर रहा हूँ। सैलवेज वैल्यू आप ये देखेंगे 1,56,569। न्यू मशीनरी आप कितने में बेच सकते थे, क्वेश्चन में दिया गया माइनस ओल्ड मशीनरी, राइट? ओल्ड मशीनरी की सैलवेज वैल्यू at the end of the fifth year and new machinery की salvage value. The new machinery salvage value was given in the question was 2,50,000, which is the scrap value, right? Old machinery का कितना है 30,000. आप अगर क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट हैज रिमेनिंग लाइफ ऑफ 5 ईयर आफ्टर विच सैलवेज वैल्यू इज 30,000. तो यस सर। इस तक आपको कितना सैलवेज वैल्यू मिला? 2,20,000 का? ये सुनो। यस सर सर। हाँ जी, बोलिए। सर यहाँ मुझे एक डाउट था हाँ, कि बोलिए। जो हमारा लास्ट ईयर में फिफ्थ ईयर में बुक वैल्यू बचेगा हम उसको सैलवेज वैल्यू क्यों नहीं कंसिडर करते हैं इसकी जगह? देखिए, बुक वैल्यू को आप कभी सैलवेज वैल्यू इसमें कंसीडर नहीं कर सकते। बुक वैल्यू इज अ डिफरेंट थिंग एंड द सैलवेज वैल्यू इज अ डिफरेंट थिंग। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक लैपटॉप पड़ा है, लैपटॉप में मेरी बुक्स के हिसाब से वो 1 लाख का है, विच इज द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मीन्स द वैल्यू विच इज देयर इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है? मेनली व्हेन आई टॉक अबाउट द बैलेंस शीट में व्हाट आर द वैल्यूज गिवन, व्हाट आर द वैल्यूज मेंशन ऑफ माय लैपटॉप, इट इज द बुक वैल्यू 1 लाख। जब मैं कबाड़ी वाले के पास गया या मैं किसी दुकान में गया जहाँ पे ओल्ड लैपटॉप को सेल किया जाता है, उसने मुझे बताया कि सर इसके 40,000 मिलेंगे। नाउ यू सी द डिफरेंस, बुक वैल्यू वाज 1 लाख एंड द स्क्रैप वैल्यू इज 40,000। और ये भी पॉसिबल था कि वो 1,20,000 मांग सकता था। यानी दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं कि बुक वैल्यू बराबर भी हो सकती है स्क्रैप वैल्यू के, बुक वैल्यू स्क्रैप वैल्यूज में अंतर हो सकता है, बुक वैल्यू माइट बी हायर देन द स्क्रैप वैल्यू, द स्क्रैप वैल्यू माइट बी हायर देन this book value, right? तो लॉसेस एंड प्रॉफिट उसी बेस पे डिसाइड होते हैं कि आपकी बुक वैल्यू क्या थी और आपने उसे कितने में बेच दिया। ठीक है प्रयोदी? गॉट इट सर। हाँ, तो इस केस में अगर आप देखें, इस केस में हमारे पास हमें प्रॉफिट एंड लॉसेस भी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। अगर आप याद करें, इस क्वेश्चन में ही मैंने आपको क्या बताया था, जो न्यू मशीनरी थी वो 2.5 लाख के कबाड़े में बिक रही थी, राइट?
लेकिन जब हमने इसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट की थी, आपको याद होगा इसकी बुक वैल्यू कितनी आई थी, 94,921, राइट? याद आ रहा है? यस। हाँ। तो बुक वैल्यू की जब हमने बात की, जब हम बुक वैल्यू की बात कर रहे थे, वो हमने निकाली थी। व्हेन वी देखो, अगर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो आप डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट से अगर माइनस कर दे तो आपके उस बुक वैल्यू आ जाएगा ना, बाय द एंड ऑफ द 5th ईयर। यस और नो? यस सर। हाँ। हमें पता लगा था बुक वैल्यू ऑफ द न्यू मशीनरी वाज 94,921। हमें ये भी पता लगा था बुक वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीनरी at the end of the 5th year was 29,491। अब देखो, ये स्क्रैप वैल्यू है, दिस इज द स्क्रैप वैल्यू, and this is the book value. Now you can easily calculate the profit or losses. Now 2.5 लाख की मशीनरी आपने 94,921 में, सॉरी 94,921 की मशीनरी आपने 2,50,000 में बेची, यानी आपको प्रॉफिट हुआ। सेकेंड मशीनरी में आपको थोड़ा सा लॉस हो रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो आप डिफरेंसेस देख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉसेस का, नहीं दोनों में प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट तो दोनों में है। यस सर। 29,491 is the book value, we have sold the machinery for 30,000। तो जो प्रॉफिट में जो डिफरेंस आया था हमने उसका भी कैलकुलेशन किया था, यू कैन इजीली ऑब्जर्व। यस सर। प्रॉफिट का आप यहाँ पे डिफरेंसेस निकाल लीजिए, डिफरेंसेस बिटवीन द प्रॉफिट, ये आ जाएगा आपका, जस्ट कैलकुलेट डिफरेंस, 94,000, 1,55,000, 079। हाँ, ठीक है, 1,55,079। Now look at this, 509, 9। राइट? तो फर्स्ट ओल्ड मशीनरी पे आपको इतना प्रॉफिट होता अगर आप इसे यूज करते, और न्यू मशीनरी पर आपको इतना होता जो आप यूज कर ही रहे हैं ऑलरेडी। तो व्हाट इज द डिफरेंस? न्यू मशीन के आने से कितना प्रॉफिट में चेंज आया है? तो दिस इज द चेंज ना, यस और नो? यस सर। एंड जस्ट लेट मी नो द चेंज। चेंज। इसमें आपको क्या करना है, 509 माइनस करना है, तो इट इज गोइंग टू बी 1,54,570। 570। 570, ठीक है। ये आपको प्रॉफिट हुआ है ना पेउदी, ये सुनो। यस सर। क्यों हुआ? क्योंकि आप नई मशीन यूज करने लगे, तो डिफरेंस, दिस इज द इंक्रीमेंटल डिफरेंस। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट द टैक्सेस, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो टैक्स भी देना पड़ेगा। यस सर। यस। टैक्स किस रेट पे? एट द रेट 50%। यस, यस सर। यू कैन कैलकुलेट द 50% टैक्सेस, इसका हाफ कर दो, ये हो जाएगा 1577, 285। 285, यस सर। 5, ठीक है, 285, 77,285। ये आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे ना, सुनो। यस सर। तो आप बताइए मुझे, टर्मिनल कैश आउटफ्लो में, आई मीन टर्मिनल कैश इनफ्लोज में इसे ऐड किया जाएगा या माइनस किया जाएगा? तो ऐड करेंगे सिर्फ जो प्रॉफिट है, ऐड करेंगे सिर्फ जो प्रॉफिट है। नहीं बच्चे, प्रॉफिट की बात ही नहीं हो रही, आपको प्रॉफिट से कोई लेना देना ही नहीं है, आपको टैक्स का इम्प्लीकेशन देखना है ना भाई। प्रॉफिट की वजह से टैक्स आपके पास से गया ना, यस और नो? यस सर। सर इसे माइनस करेंगे। माइनस करेंगे। मैं आपसे कई कई बार बता चुका हूँ, इन केस इफ देयर इज अ लॉसेस, इफ देयर इज अ कैपिटल लॉसेस, देन वी हैव टू डिडक्ट द लॉसेस, सॉरी वी हैव टू in add the tax benefits in case if there is a losses, if there are the profits, profit है, सीधी सी बात है, मुझे प्रॉफिट मिला 1,54,570 का। if there is a profit of 1,54,570, it means I have to shell out the taxes of 77,285। तो अब तो मुझे देना पड़ रहा है ना टैक्स, तो इट इज माई आउटफ्लो, तो इसे माइनस कर ले यहाँ से। अब बताइए, 62,134 plus 2,20,000 minus 77,285। Now tell me the value. 60, 77, 297, 285, and 7. Sorry,
60, 70, 82, 82, Sir, 70. 2,04,849. ठीक है, 2,04,849. वेरी गुड. So 2,04,849 is the terminal cash inflows. It means it is the cash inflows of last year. अब clear है, सबको clear है? Yes, Yes. right. रचना, यस सर. सर ये फिर प्रॉफिट कहाँ आएंगे जब ये 1,54,000 हाँ जी रचना, हुआ क्या है? कह रही हैं? सर ये जो प्रॉफिट हुआ है हमें इन ओल्ड हाँ, और बुक वैल्यू और सोल्ड वैल्यू दोनों का डिफरेंस जो आया था ये हाँ, 1,54,000, इसको कहाँ शो करेंगे फिर हम? ये जैसे प्रॉफिट हुआ है. देखो, आप प्रॉफिट पे एक आइडिया है ना आपको, हुआ है नहीं हुआ. मान लीजिए रचना, सीधी सीधी सी बात है कि अ, आपके पास कोई चीज 30,000 की थी, राइट? आपने उसे 2 लाख में सेल कर दिया. यस, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,70,000. प्रॉफिट तो है. बट रचना, आप मुझे बताइए कि आपके पास सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं आया, आपके पास टोटल पैसा 2 लाख आया है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट रचना? राइट. यस. हाँ, हमें इंक्रीमेंट देखना होता है, इसलिए हम प्रॉफिट को इग्नोर करते हैं. हमेशा आप ध्यान रखना, बिकॉज प्रॉफिट की तो कैलकुलेशन आप ऑलरेडी ले चुके हैं टैक्सेस में. सी, समथिंग इज ऑफ रुपीज 30,000. 30,000 की बुक वैल्यू थी, आपने उसे 2 लाख में बेच दिया. यस, प्रॉफिट तो है, बट वो प्रॉफिट कहाँ पर है? प्रॉफिट इस 2 लाख में ही तो इंक्लूडेड है ना. यस और नो? यस सर. सीधी सी बात है, प्रॉफिट तो 2 लाख में इंक्लूडेड है. 2 लाख का आपके पास आया, वो मैटर करता है. हमेशा ध्यान रखना, हम इनफ्लोज की बात कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग प्रॉफिट्स की बात नहीं करते. हम हमेशा ये बात करते हैं कितना पैसा गया, कितना पैसा आया. हमें इससे मतलब नहीं कि 1,70,000 का हमें फायदा हुआ. हमें इससे मतलब है हमारे पास 2 लाख आए. एम आई क्लियर? यस सर. हाँ, तभी तो हम इनफ्लोज की बात करते हैं ना. अब हमें ये भी देखना होगा कि 1,70,000 का प्रॉफिट हुआ, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 1,70,000. उस पर टैक्स भी तो देना पड़ेगा ना, राइट? टैक्स यस. कितना देना पड़ेगा? मान लीजिए 50% है, तो कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी? 85, 85,000, राइट? तो अब आपके पास 85,000 चले जाएंगे. एम आई क्लियर? यस सर. एक तरह से 2 लाख आए थे, उसमें से 85,000 चले गए, तो आप पहले 2 लाख ऐड कर लेंगे, फिर 85,000 को माइनस कर लेंगे. यही हमने यहाँ पे किया है ना, देखो, राइट? यस सर. हाँ. तो 2,04,849 विच इज 2,04,849 इज द टर्मिनल कैश इनफ्लो. ठीक है. आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों ने अगर कर लिया है, समझ लिया है, तो आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली. यू कैन इजीली सॉल्व द अदर न्यूमेरिकल्स एज वेल. ठीक है. ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से इनफ्लोस निकाला जाता है. इफ आई अच्छा, क्या हमने ऐसे क्वेश्चंस किए जिसमें हमने प्रेजेंट वैल्यू भी निकाली है? Not yet, sir. हाँ, तो इस क्वेश्चन का मैं प्रेजेंट वैल्यू भी आपको बता देता हूँ कि जो इनफ्लोज आए उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है. राइट. इट्स वेरी सिंपल. वी हैव ऑलरेडी डन दैट पार्ट इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बट मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है. सेम क्वेश्चन. आप इतना काम कर लेंगे, आपसे अगर एनपीवी पूछा गया है तो आपका काम यहाँ पर खत्म नहीं होगा, बिकॉज यू नीड टू हैव द प्रेजेंट वैल्यूज इन इनफ्लोज. नाउ, अगर इस क्वेश्चन को मैं समराइज करूँ, वन बाय वन, द वेरी फर्स्ट थिंग, इनिशियल कैश आउटफ्लो. हाउ मच वाज द इनिशियल कैश आउटफ्लो इन दिस क्वेश्चन? बताइए. 3,15,000 was the initial cash outflow. Yes, class? यस. Right? So initial cash outflow was how much? 3,15,000. हमने कल ही कैलकुलेट किया था, राइट? 3,15,000 was the initial cash outflow. क्यों ऐसा था? क्योंकि हमारे पास एक ओल्ड मशीनरी थी, एक नई मशीनरी थी, उसके बाद हमने टैक्स इम्प्लीकेशन भी उसमें से माइनस किया, एंड देन वी हैड गॉट 3,15,000 एज इनिशियल कैश आउटफ्लो. यानी मेरी जेब से इतना पैसा गया in time zero. It means the present value of this money was this. Right? अब हम बात कर रहे हैं कैश CFAT की, कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस. राइट. क्या कोई जीरो ईयर में कोई प्रॉफिट था?
बताइए। नो सर। हाँ, 0 ईयर में आपके पास कोई भी इनफ्लोज नहीं आए थे, आपके इनफ्लोज हुए फर्स्ट ईयर से। हाँ, P2 का मतलब प्रेजेंट ईयर, आई मीन इसे P की जगह 1 ही कर लेते हैं। 1, ईयर नंबर 1, ईयर 2, ईयर 3, 4 एंड ईयर 6। Now, one by one. Cash flow after taxes for the first year was 91,000, right? 91,000, जो हम already calculate कर चुके। Then we had 80,300 cash inflows for the second year, 72,365 is for the third year, and 66,000 for कितना है? 66,000 रचना 486. 486, very good. 66,486। एक और स्टूडेंट्स ने आंसर दिया था ना, निखिल। यस निखिल। यस सर, यही है। हाँ ठीक है, आपका भी सेम आ रहा है, गुड। यस। 66,486। नाउ तो फॉर द लास्ट ईयर जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, विच इज 2,04,849। देखो प्राइमा फेसी, इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, if you look at this question, 3,15,000 is the present value of the inflows, outflows. Now if you look at the cash flow after taxes, they are much higher than the outflow value, but at the same time they are not in present, they are in future. So what you need, you have to bring them down to, you have to convert them into the present value, and in order to convert them into the present value, what we need, क्या चाहिए होता है? Counting rate. Yes, which is the discounting rate, जो आपको क्वेश्चन में भी दिया गया होगा। मान लीजिए इस क्वेश्चन में डिस्काउंट रेट दिया गया था, आई एम नॉट वेरी श्योर कि इस क्वेश्चन में मैंने लिखा है नहीं लिखा, नहीं हम ले लेते हैं, राइट। So I am considering the discount rate of 15%. What I am taking 15%, 15, हाँ 15 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15% is the discount rate, which is K also 15%. Now we need 15% the discount. 15% is the discounting rate. अब ये कैसे निकाला जाए? 15% का मतलब क्या होता है? ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट द रेट 15%। हम ये तो देख रहे हैं ना, 15% पे ₹1 की वैल्यू। अच्छा ईयर 1 में बताइए ₹1 की वैल्यू क्या होगी? सॉरी ईयर 0 में 1 ही होगी ऑब्वियसली, यस और नो? क्योंकि प्रेजेंट में ₹1 की वैल्यू 1 ही होगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा उसकी वैल्यू कम होगी या ज्यादा? कम होगी, राइट? कम। वेरी गुड। नाउ इफ आई वांट टू नो, देखिए देयर आर टू वेज, बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आई एम नॉट वेरी श्योर लैपटॉप में एलसी होता है मिल गया। बहुत बड़ा हो गया। Now look at this. 1 divided by 1.15, राइट। एक को मैंने 1.15 से डिवाइड कर दिया। यू में आज की सर हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम चाहते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालना, क्योंकि ₹1 15% से कम हो रहा है, इसलिए फर्स्ट ईयर में जो उसकी वैल्यू आएगी ये होगी कुछ ये 0.8695। एम आई क्लियर क्लास? राइट। सर एक बार और बता दीजिए। एक सेकेंड। सी 1 का मतलब द वैल्यू ऑफ ₹1, राइट। ₹1 की वैल्यू प्रेजेंट में ₹1 ही रहेगी, बट फॉर in every single year the money is going to discount by 15%, yes or no? The money value is going to be discounted by 15%। डिस्काउंट ही तो हो रही है ना, मनी की वैल्यू कम होती जा रही है, yes or no? Right? यस। यस सर। डिवाइड करेंगे, we will divide it by 1.15,
1.15 का मतलब 1 प्लस डिस्काउंट रेट. 1 प्लस डिस्काउंट रेट मीन्स 1 प्लस 0.15. तो मैंने क्या किया 1 डिवाइडेड बाय 1.15. क्लियर है? Yes. Now look at the value. कितना है 0.8695. So what I'm going to write here, 0.8695. Now अब आगे आपको बार बार पॉइंट नहीं करना, आप डायरेक्ट डिवाइड करते रहो इसको 1.15. Now look at the value 0.7561. 0.7561. Now you can further divide it by 1.15. Now look at the value 0.6575. 0.6575. Now again divide it by, further divide कर दो 1.15. How much? 0.5715. Now 0.5717 है, ठीक है, बात नहीं कर 1.15, which is 0.4971. 0.4971, and this was 0.5717. So this is the present value of ₹1. यानी एक साल के बाद इस ₹1 की वैल्यू रही almost 87 पैसा. In the second year 76 पैसा. In third year 66 पैसा, almost 66 पैसा. In the fourth year 57 पैसा, and fifth year ये almost 50 पैसे के बराबर हो गया. क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं, राइट? तो इस तरह से आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है, कोई बड़ी बात नहीं थी. नॉर्मली ऐसे बताया नहीं जाता, डायरेक्ट हम टेबल ही देख लेते हैं, बट आपको मैनुअल तरीका भी पता होना चाहिए, इसलिए आई डायरेक्टली कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर, एंड आई आल्सो लेट यू नो हाउ वी कैन फाइंड दीज वैल्यूज इन द टेबल. लॉग आई मीन जो टेबल जो होती है उसमें टेबल में भी वैल्यूज यही सेम दी गई, ठीक है. नाउ लुक एट द वैल्यूज. इफ आई टॉक अबाउट द वैल्यूज, what you need to do, you just multiply these values. बताइए, ये आ गया present value of inflow. We have present value of inflow. Please let me know the values. The first one is Yes. 79,124.5. Okay, ठीक है. Second one. Sir, I'm calculating. LCV. 60,714.83. 60,714.83. 14. Yes, sir. Okay, ठीक है. Next value. Next is 47,580. Next 66,486 multiply 0.5717. 0.5717, which is 38,010. 38,010. The last value 2,04,849. 849 ये ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा. मल्टीप्लाई 0.497 and the value is 1,01,830. Yes, class. So these are the present value of inflows. Now we have the present value of inflows. Can you compare with the initial cash outflow? You can easily compare by adding up. Now we can add these values. Okay, I'm going to add these values. 38,010 plus 47,580 plus 60,714 plus 79,124. Now the value is
value is present value is 3,27,258. इसका मतलब ये जो इनफ्लोज मिलने वाले थे हमें CF80, जब हमने प्रेजेंट वैल्यू इनकी पता की तो ये पता लगा आज के वक्त इनकी वैल्यू होने वाली है 3,27,258. इट मीन्स the present value of inflows are 3,27,258 and the present value of outflow was 3,15,000. थोड़ा सा ही ज्यादा है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पता लगा, राइट? जबकि इसे देख रहे थे तो बहुत बड़ा फर्क पता लगा. नाउ NPV 3,27,258 minus 3,15,000. What is the NPV? 12,250. Yes, NPV is 12,258. Yes, it is creating the shareholders wealth. But if I want to know the PI, profitability index, all I need to divide them. Yes or no? ये तो करना था. All I need to divide these values. If I divided these values, what I have got? Divided by 1.03, sir. 1.03. Look at the present value. It means for every single 1 rupees of outflow, we are getting 1 rupees 3 paisa present inflow. Yes or no? यही तो मतलब हुआ. Yes, sir. We Yes, have absolute measurement as well as we have relative measurement. The absolute measurement काम आता है कि क्या shareholder value create हो रही है तो कितनी हो रही है, और ये पता करने में काम आता है in order to compare, right? It is something relative measurement. So we have solved the entire question and we have got to know how these values can be found, right? तो ये हमें पता लगा. अच्छा, मैं आपको टेबल भी बता देता हूँ, ये वैल्यूज टेबल में कैसे दिखाई दी होंगी. आपको पता है या बताना है मुझे? इफ यू नो इट, मैं नहीं बताता. इन केस इफ यू डोंट नो देन आई कैन शो यू. बताइए. सर एक बार बता दीजिए. ओके, एक बार हम देख लेते हैं इसे. मेरे पास है वो. I think this is the one time table. This one is the time. It's compounded value annuity factor, no? Is the present value factor. Yes, present value factor. हमें चाहिए 15%, right? 15% was the rate. So this table starts from 16%. Yani we need first page of this table. It is compounded value factor annuity table, no. It is present value factor annuity, no. Present value factor annuity, no. CVF, no. CVFA, yes. Now look at this present value factor table. दिख रहा है? The title is present value factor for a lump sum amount. I hope you can see this, right? yes. Now look at this. 15%. See, first one was 870. याद आ रहा है? First one. Now look at this. For year one, 8.7,
0.870 पॉइंट नहीं तो अलग आ रहा है 15 ही था ना seeing the wrong table ये सही आ रहा है 70 हाँ ठीक तो है 8695 so in table they have considered 0.87 yes class they have taken Yes. Yes, sir. approximation value 0.87 now the second value they must have taken 0.756 see 0.756 see 756 0.756 now the third value in the table we have 6575 in table they have 658 अप्रोक्सीमेशन है कोई दिक्कत नहीं होगी इससे क्वेश्चन में आप ले सकते हैं अप्रोक्सीमेशन मैंने एब्सोल्यूट वैल्यूज लिख ली थी कैलसी से आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ही आती हैं टेबल में आपको अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज मिलेंगी 572 नाउ लुक एट दिस वी हैड 5717 इन्होंने 572 ले लिया ठीक है नेक्स्ट इन्होंने लिया 497 समझ आया क्लास टेबल से कैसे देखना है these are the table Yes, values sir. and these are manual values that's how we have to look at the table right. I think this table is also on your what this is also on your classroom right classroom Yes. में है ये Yes, sir. table हाँ. You people can also use this table from your classroom I mean if you haven't bought the book yet you can look in your table and you can have a good clarity over this ठीक है तो आई होप आज की क्लास में कुछ चीजें समझ आई होंगी आप लोगों को एंड नेक्स्ट क्लास में हम आईआरआर करने वाले हैं वी विल डू द आईआरआर पार्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है और उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे विच आई विल गिव यू एज होमवर्क यू पीपल कैन सॉल्व देम जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे क्योंकि मेरी तरफ से जितना मैं न्यूमेरिकल करा सकता हूँ विद इन a limited time I will do it for shortly but at the same time without you people if you won't practice तो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी होंगी क्वेश्चन क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी हो जाते हैं धीरे धीरे मैंने तो आपको बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन कराए हैं सीए लेवल के क्वेश्चन थे ये दो जो मैंने आपको कराया लास्ट 2 क्लासेस में there are a few questions which are very complex in nature but I don't want to go with this question because I am not seeing the people they are responding or they are enthusiastic to solve those questions that's why I'm just limiting my coverage area कि मैं अपना सिलेबस पहले कराऊँ ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको आई होप आप लोग पढ़ रहे हैं घर को समझ आ रहा है आपको वैसे भी anyways okay it's for time for the roll call सर हाँ जी बोलिए जो आपने 3 क्वेश्चंस शेयर किए थे उसमें से एक क्वेश्चन था जिसमें प्रेजेंट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट दिया था जैसे अभी मैंने सॉल्व किया वो थोड़ा सा समझा दीजिएगा वो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था तो उसको नहीं डिफरेंट नहीं है बिल्कुल डिफरेंट नहीं है वो बताइए क्या डिफरेंस लगा उसमें फिक्स कॉस्ट डिफरेंस लगा आपको सर कॉस्ट ने उसमें पार्ट्स को लेके बात थी और उसमें डिफरेंस निकालने में मतलब समझ में नहीं आ रहा था उसको एक साथ क्वेश्चन में पुट कैसे किया जाए अच्छा इफ आई शेयर द सॉल्यूशन विद यू वुड इट बी फाइन यस सर so I can share the solution to you and you can see that or if the other students are interested they can ask Pyodi she can share the solution with you all ऐसे मेरे पास कम से कम 70 क्वेश्चंस हैं बट अगेन मुझे आपकी आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी जो मुझे नहीं लगता तो आई एम लिमिटिंग द डिस्कशन सो जल्दी ही फिर हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर देंगे विद द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मैंने कितने घंटों बैठकर लाइब्रेरी में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व किए थे आपने शायद डेट भी इस पे शायद एक क्वेश्चन पे डेट भी है which is 16th of April 2015 तो ये 6 साल पुराने 6.5 साल पुराने क्वेश्चन हैं ओके एक सेकेंड बस टुडे इज 27th राइट यस
Okay, 27th. We have Asija. Yes. अर्पित 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 नहीं है. तान्या, ऋतिक, अर्चित अर्चित. आदित्य, लोकेन्द्र, कुणाल. Yes, Kunal. Hello, Kunal. Are you there in the class? No, you are not. यस सर. ठीक है. समझ तो आ भी रहा है आपको, मिस्टर कुणाल? यस सर, आ रहा है. क्लासेस में तो आप रेगुलर नहीं हो. सर तबीयत खराब थी थोड़ी. ओके, फाइन. ठीक है. रचना, she is there. Present, sir. आयुषी, no. Priyanshu, Karthik, Satish, Hartik, Kushi, Vishal, Amit, Aman. We have Aman, no, not Aman. Vandana, Manasi, and Aditya. Oh. Yes. Yes, Gurnur, Gurnur. Gurnur. यस सर. हाँ जी, क्लास में हो आप? हाँ जी सर. जयंत, दिव्यांशु, प्रिया, आदित्य, विक्रांत, निखिल. प्रेजेंट सर. ओके, मनीष. यस. Manish present. ठीक है. तो एवरीवन, अर्चित का हो गया, बेहूदी, रिताव, मनीष, रचना, निखिल, आशीष, और कुणाल. थैंक यू सो मच क्लास. Thank you. Thank you, sir. Excuse me, sir. हाँ जी, रिताव बोलिए. Sir, I have a class recording in my drive. मैंने अभी चेक किया था. It's of 23rd. तो उसको रीनेम करना होगा, I guess. हाँ, उसको रीनेम करना होगा. पहले मैं देख लेता हूँ कहाँ से रीनेम करना है. मैंने लेट यू नो कि कौन सी वाली क्लास रीनेम करनी है. ठीक है. Okay, sir.